Hey everyone, welcome back to the channel Pallabi Tutorials and I hope you all are doing well. आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी भी बनाऊंगी. But here I am because of lockdown. I'm going to share how you can groom or how you can do your eyebrows at home. So let's get started with today's video. So here you guys can see the condition of my eyebrows. It's all grown and I'm looking like a hairy bear. मेरा जो आईब्रोज है वो नेचुरली बहुत ही थिक है. मेरी दोनों आईब्रोज टोटली डिफरेंट है फ्रॉम वन अनदर. दे लुक लाइक सिस्टर्स बट नॉट ट्विन सिस्टर्स, बट इट्स ओके. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट स्टेप नाउ. तो मेजर करने के लिए आपको फर्स्ट लेना है एक थ्रेड. कोई भी थ्रेड आप ले लीजिए, जिसके साथ आप सिलाई करते हो वो थ्रेड ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा काजल अप्लाई कर लीजिए एंड देन फॉलो मी, जो कि मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर. आपको ऐसे ही मेजर करना है दोनों आईब्रोज को ताकि दोनों ही आईब्रोज पैरेलल रहे और आपको आसानी हो प्लग करते वक्त. सो जस्ट फॉलो कि मैं कैसे कर रही हूँ और आपको भी ऐसा ही करना है. हम लोग आज प्लकिंग नहीं करेंगे, आज हम लोग वैक्सिंग करेंगे. मेजरमेंट हो गया है. अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है, आपको डर लग रहा है, तो यू गाइस कैन फिल योर आईब्रोज विद पाउडर प्रोडक्ट. इसके बाद आपको क्लियरली देखने को मिलेगा कि कौन कौन से पार्ट्स आपको क्लियर करना है आईब्रोज का. Now it's time to prepare our wax. You just need 1 cup of sugar and then add half cup of water. Same cup का ही आप measurement ले लीजिए. बहुत ही आसान है इसे बनाना. और आपको यहाँ पर ऐड करना है half of a lemon. After it cools down, ये जम नहीं जाएगा अगर आप इसमें lemon ऐड करोगे. आपको इसे बॉईल करना है up to 5 minutes. Remove the heat and store it in a glass bottle. Strictly avoid plastic bottle for storing it. और इसे आप up to 1 month use कर सकते हो. Refrigerate मत करना इसे. Normally आप घर पे रख सकते हो इसे. So now it's time to wax the eyebrows. So first I'm going to apply some powder over my eyebrows. You can use baby powder, loose powder, whatever you have. And then with a wooden spatula or popsicle stick आप wax को ले लीजिए और अप्लाई कर दीजिए all those areas जहाँ पर आप wax करना चाहते हो. उसके बाद आपको लेना है एक कॉटन का पीस. पुराने टी शर्ट से आप कट कर सकते हो इस कॉटन को, जैसा मैंने किया है. एंड देन यू हैव टू अप्लाई दिस ओवर द वैक्स. और आपको आपके आईब्रो की ग्रोथ के ऑपोजिट वैक्स करना है. सो आपको स्ट्रेच करना है आपके स्किन को और ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको वैक्स कर देना है. This is all the unwanted hair. वैक्स करने के बाद भी थोड़ा बहुत छोटे छोटे जो अनवांटेड हेयर है वो रह जाता है आईब्रोज के इर्द गिर्द, तो उसे आप ट्वीज कर सकते हो. बट आई अवॉइड ट्वीजिंग बिकॉज उससे मुझे बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स हो जाता है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू शेव आउट ऑल द अनवांटेड स्मॉल हेयर्स. अभी मैं अप्लाई करूंगी आइस. आपको ज्यादा यूज नहीं करना है इसे, जस्ट 15 to 20 seconds ऑन ईच आईब्रोज.
Then apply any gel over your eyebrows. I'm using aloe vera gel here. Aloe vera gel antiseptic का भी काम करता है, so कोई भी gel apply करना is important after you wax your eyebrows. Then I'm massaging my eyebrows with my finger. ये steps important है after you done with your wax. इसे बिल्कुल भी skip मत कीजिए. I'm going to show you how you can fill your eyebrows. I'm using a brown eyebrow powder to fill my eyebrows. And then I'm going to clean my eyebrows with a concealer. इससे आपका जो eyebrows है उसका shape और भी clean दिखेगा और आपका eyebrows और भी stand out होगा. And here is the finished look, you guys. I hope कि ये video आपके लिए helpful रहा है. Do try this. Do share this video with your friends and family and help them too. Like this video, guys, and subscribe to my channel for more such videos. Press the bell icon so you guys can get notification whenever I post a new video. That's it for today. I'll see you in my next video. Till then, stay happy, stay healthy, and always love yourself. Don't forget that you are beautiful and be a kind one. I love you guys so much. Bye. Take care.